سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، کم منبر بنا کر یہ بولے نبی، بولے منبر بنا کر یہ کم نبی، کم منبر بنا کر یہ بولے نبی، بولے منبر بنا کر یہ کم نبی، یہ ہے منبر علی کا تمہارا نہیں، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا علی اس کا مولا ہوں میں، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، کیا یقین میں نبی نے پکارا نہیں، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، بدر سے کربلا تک مورخ بتا، بدر سے کربلا تک مورخ بتا، بدر سے کربلا تک مورخ بتا، بدر سے کربلا تک مورخ، ہو کرم یا علی، ہو کرم یا علی، علی علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا علی، علی 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 مولا علی، علی مولا علی، علی مولا علی، علی نس نس بولے علی علی علی، میری نس نس بولے علی علی، میری روح کے اندر علی 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 علی، انگ انگ بولے علی علی، میرے تن من میں ہے علی علی، میرا انگ انگ بولے علی علی، میرے
तन मन में है अली अली। मेरी हयात भी तू, मेरी नमाज भी अली अली तू, मेरे दिल का चैन भी और चारा साज भी। हो करम या अली, हो करम या अली, अली अली हो करम या अली, हो करम या अली। ऐवान अकीदत में हरदम, ऐवान अकीदत में हरदम रहता है लबों पर अली 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 अंग अंग बोले अली अली, मेरे तन मन में है अली अली। मेरा अंग अंग बोले अली अली, मेरे तन मन में है अली अली। हर दर्द की दवा ये ना ही करे अली अली उसको कोई भी गम नहीं जिसका ये विर्द है। हो करम या अली, हो करम या अली, अली अली हो करम या अली, हो करम या अली। तंग दस्ती मुझसे दूर हुई, तंग दस्ती मुझसे दूर हुई जब आया ज़बां पर अली 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 अंग अंग बोले अली अली, मेरे तन मन में है अली अली। मेरा अंग अंग बोले अली अली, मेरे तन मन में है अली अली। नादे अली का पढ़ना कुरान से कम नहीं। अली अली तू मेरी समत देख ले फिर कोई गम नहीं। हो करम या अली, हो करम या अली, अली अली हो करम या अली, हो करम या अली। बस तेरी सिफारिश सुनता है, बस तेरी सिफारिश सुनता है वो खालिक अकबर अली 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 अंग अंग बोले अली अली, मेरे तन मन में है अली अली। मेरा अंग अंग बोले अली अली, मेरे तन मन में है अली अली। मेरा यकीन कामिल कहता है बस यही, अली अली तेरे करम की भीख से बनती है। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولانا يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولانا يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا أبراض كل مؤمن والمؤمنات. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah 41, verset 46. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن عسى فربك بظلام للعبيد. محمد وآل محمد. Mathématicien anglais énonce les lois du mouvement et de la gravitation universelle. Parmi ces lois, nous avons la troisième loi de Newton qui s'énonce ainsi. Les forces se produisent toujours par paires. Si l'objet A exerce une force F sur l'objet B, alors l'objet B exerce une force égale et opposée moins F sur l'objet A. Sous forme résumée et plus simple, la troisième loi de Newton s'énonce ainsi. À chaque action est associée une réaction égale et de direction opposée, de sens opposé. 1400 ans auparavant, l'islam expliquait ce même principe via le Saint-Coran, mais avec une différence majeure. En effet, ce principe action-réaction, cause-effet, ne s'applique pas seulement à la dimension physique de ce monde, mais il s'applique également à la dimension morale et spirituelle de ce monde. Si nous lisons le Saint-Coran, de la sourate 99 se termine par les versets suivants.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque aura alors fait le poids d'un atome de bien le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque aura commis le poids d'un atome de mal le verra. De même, le verset récité durant le khutbah nous indique la chose suivante. Quiconque fait le bien le fait dans son propre intérêt, et quiconque fait le mal le fait à son propre détriment, car ton Seigneur ne commet point d'injustice envers les hommes. Durant ces quelques instants, je souhaite vous parler des implications morales, des réactions qui suivent nos bonnes, mais surtout nos mauvaises actions. Quelquefois, nous commettons des péchés en pensant qu'ils sont banals, car tout le monde le fait. Ou alors nous commettons des péchés en pensant que personne ne sera au courant et que cela n'aura strictement aucune conséquence. Énorme et très lourde erreur, car chacun de ces péchés, à chacune de ces mauvaises actions que nous commettons est associée une réaction qui nous affectera durant notre vie tout entière, et même au-delà. Cette réaction est parfois immédiate et parfois se fait attendre, mais elle est inévitable. Remarquons ici les commémorations chaque année par 2 millions de chiites du deuil de l'imam Hussein alayhi salam, qui est encore aujourd'hui, et là, la réaction permanente et perpétuelle ayant lieu sous nos yeux du grand sacrifice de l'imam, dont les effets et les réactions se font sentir 1400 ans après son action. Notre 7e imam, Imam Musa al-Qadim alayhi salam, nous explique aussi que la réaction d'une bonne action n'est pas liée à la personne qui l'effectue. Une bonne action réalisée portera ses fruits, peu importe la religion, la croyance ou la non-croyance de l'auteur de cette bonne action. Et une mauvaise action réalisée verra la conséquence et la réaction de son péché s'il ne se repent pas. Et ce même s'il est debout chaque nuit pour faire la salatul layl. Pour illustrer ceci, prenons l'exemple du parfum. Peu importe la personne qui se parfume, croyant ou non croyant, pratiquant ou non pratiquant, riche ou moins riche, le parfum sentira de la même manière sur chacun. Et ce, que le parfum ait été volé, acheté avec de l'argent halal, sale, ou acheté avec de l'argent propre, halal, et sur lequel le khums a été prélevé. Le parfum sent bon, car c'est un parfum. La bonne action implique une bonne réaction, un bon effet. Une récompense, car c'est une bonne action, et peu importe la personne qui la réalise. Telle est la justice et le système créé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien ne passera inaperçu, chers frères et sœurs, si nous sommes impliqués aujourd'hui, hier ou demain, dans quelque acte d'injustice. Reformons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Changeons nos comportements dès maintenant, et particulièrement envers celui qui est faible, celui qui n'a pas les moyens de se défendre, qui n'a pas d'avocat pour aller se plaindre au tribunal ou demander son dû. Car rappelons-nous que cette personne qui n'a personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est à ses côtés. Et Dieu ne laisse aucune injustice sans conséquence. Toujours notre 7e imam, dans un hadith qui reflète parfaitement la 3e loi de Newton, l'imam nous dit « Ya bunay, man kashafa an hijabin nas in kashafat awratu baytih » Si tu dévoiles les secrets des autres, tu déshonores une autre personne en dévoilant ses défauts ou en disant du mal de lui. Si tu n'as aucun respect pour l'honneur de cette personne, alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se chargera de dévoiler au public tes propres défauts. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se chargera de t'humilier. Et ce sont les effets, les réactions inévitables des péchés, des actions que nous commettons. Avec durud par Muhammad wa ali Muhammad salawat.
जुल्फ़िकार मरहम को काटती हुई पहुंची जो जुल्फ़िकार पहुंची जो जुल्फ़िकार के ठहर राखे खुद जमीन कहाँ या अली मदद या अली मदद अली मदद खुद सारे उम्र से मुखालिफ रहा मगर मुखालिफ रहा मगर खुद सारे उम्र से मुखालिफ रहा मगर मुखालिफ रहा मगर ठोकर लगे जो दिल से कहा या अली मदद या अली मदद या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु શેખ સાહેબ હમણાં આપણા અલ મુંતઝર અલૈહિસ્સલામ ક્રેશ કોર્સમાંથી નીકળેલ હજી આજ પહેલો જ દિવસ હતો, પહેલા જ દર્સ હતા અને હજુ શરૂઆત હતી. એમાંના એક નવજવાન આપણી સમક્ષ હમણાં પહેલી તકરીર ફ્રેન્ચીમાં રજૂ કર્યો. હવે એના બારામાં દિલ ચાહતું હતું કે કોઈ એના માવતર આપણને હમણાં પોતાનો અભિપ્રાય અને એમ્પ્રેશન પેશ કરે, પણ માવતરની ગેરહાજરીમાં તમે ચાચા માવતર તરીકે બે રીતે છો. એક તો તમે ઇલ્મ આપો છો એટલે માવતર છો, અને બીજું તમે એમના ચાચા થાવ છો એટલે માવતર લેખાય. માવતરનો અત્યારે આ બારામાં શું એમ્પ્રેશન અને અભિપ્રાય છે ટૂંકમાં અમને પેશ કરવા તમારાથી હું વિનંતી કરીશ. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. હકીકતમાં એ તો ફક્ત એ બાપ જ સમજી શકે છે કે જેનો જવાન દીકરો કોમની સામે હાજર થાય અને બે શબ્દો બોલે તો એ એમ્પ્રેશનના અંદરમાં દિલની અંદરમાં જે ખુશી હોય છે એ જબાન ઉપર આવી નથી શકતી. એના પાસે એવા અલ્ફાઝો નથી કે જે અલ્ફાઝોથી આપણે એક્સપ્રીમે કરી શકીએ કે દિલની અંદરમાં શું ખુશી પસાર થાય છે. ફક્ત એટલું જ કે જ્યારે કોઈ પણ માવિત્રના સામે આ પ્રમાણે નવજવાન આવી અને બે શબ્દો જ બોલી જાય તો એ બાપ અને એ માના દિલના ગહેરાઈથી જે દુઆઓ નીકળે છે એ દુઆ હકીકતમાં એ નવજવાનને જિંદગીને માટે પૂરી જિંદગીને માટે ને હું તો એમ સમજું છું કે આખેરતની કામયાબીને માટે કાફી છે. એટલા માટે હું હર માવિત્રોને અપીલ કરું છું, હર માવિત્રો પાસે માગણી કરું છું કે પોતાના નવજવાનને આ પ્રમાણે હિંમત આપે, અને નવજવાન પાસે પણ માગણી કરું છું કે તમે આવો, કોમની સામે આવો, બે શબ્દો બોલો અને તમારા માવિત્રોની અંતકરણની જે દુઆ છે એ તમારી કામયાબીને માટે લઈ જાઓ તો એ હકીકતમાં તમારી જ ખુશનસીબી છે. અહસન, જઝાકુમુલ્લાહ ખૈર. અહસન. અલ મુંતઝર અલૈહિસ્સલામમાં જેઓ પાર્ટિસિપેટ થાય છે તેઓમાંના એક નવજવાનથી હું મુખાતિબ થઈને અર્ઝ કરીશ કે હમણાં આ ક્રેશ કોર્સ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કેમ પસાર થયો એની ઉપર ટૂંક એમ્પ્રેશન, અને ખાસ કરીને એક નવજવાન આપણી સમક્ષ જે પારોલ લીધો એના બારામાં તમે શું કહેવા માંગો છો, તમારા શાંતિમાં તમારા એમ્પ્રેશન આશો. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह, ક્રેશ કોર્સ તો માશાલ્લાહ છે. Bon, organisation excellente, merci beaucoup aux organisateurs. અને આ દર્સ માટે હું બહુ ખુશી થયો કે આપણે પોટેન્શિયલ, આપણે જવાનની પોટેન્શિયલને આપણે એક્સપ્લોઇટ કરે છે, અને હર જવાનને એવી રીતે કરવું જોઈએ કે રિલેશન entre જે આપણે સ્કૂલે શીખે છે અને ઇસ્લામ સાથે બેને એક કરે, અને તમને જરૂર દેખાશે કે એમાં રિલેશન છે અને એ બધું દીન જ છે. જઝાકલ્લાહ. અહસંત. હવે મને લાગે છે જવાદને કાંઈ આ બારામાં પેશ કરવું હશે કે નવજવાનોના ચહેરા હું દેખું છું એટલા નુરાની છે, હસમુખ છે, મુસ્કુરાઈ દેખાય છે, તદ્દન કાંઈ ને કાંઈ હાંસિલ કર્યા હશે અને દિલની ગહેરાઈથી એ લોકો આપણી સમક્ષ પોતાના એમ્પ્રેશન પેશ કરશે. બિસ્મિલ્લાહ. તો બસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણું આજે ક્રેશ કોર્સ ચાલુ થયું છે. બસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે ઇન્ટ્રોડક્શન હતું, c'était super હમણાં સુધી. ને આજે આપણા જે મારા દોસ્ત છે, કુઝન છે, જે આજે પસાર થયા
public summit, j'ai trouvé ça très excellent. Vraiment, c'était super. Nevali, il a fait la relation des choses qu'on a appris au lycée avec l'islam. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Moi-même, j'étais étonné de ce qu'il a fait. Et qu'on devrait faire ça plus souvent. Ahsan. Shukriya. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baraka. Nashadu wa badraki. Salam. Ahsan. اس ورد سے زندہ باد ہوئے اب دال قلندر